Hi friends, hello. Very good evening to all of you. Finally, after a long time, we again have another mock test for BITSAT. I hope your preparations are going good. Yes, guys, let me see that Josh in the chat box. Fadafat, awesome. Fadafat जो भी हैं जल्दी जल्दी attendance दे दीजिए. There is Bhargav, welcome Bhargav. Harpreet is there. Amok, Kushagra, Apar, Dark Knight. बिल्कुल यार हरप्रीत आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं. यस ऑसम 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 बहुत बढ़िया. श्रद्धा, जयेश, शिवानी, ऑसम गाइस. चलो फटाफट शुरू करेंगे आज का सेशन. मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग दोनों चीजें हैं. हेलो भार्गव, राइट? So come on, फटाफट who everyone who's there, फटाफट give the attendance by putting a like on this video and share the video to your friends so that it reaches out to as many people as possible and we can kickstart the session soon. Yes. Hello Apar, Kinshuk, Rajshri More. Hello Rajshri, I think you are new. Yes, there's Rohan, Jayesh. Hello everyone. Very good evening to all of you. Yes, we are going to have a similar round of things that we used to have before. Yeah, there's going to be a star to every person who gives the correct answer to the question first. And of course, there is +3 who scores the correct answer, -1 for giving a wrong answer, and 0 marks for not attempting the answer. These markings have to be done by yourselves so that you can have an analysis also. Up tak jitne bhi mock tests hue hain, we have seen that we have grown step by step using all these different kinds of questions, different varieties of questions, so that we strengthen our preparation for BITSAT. And I hope that we have helped at Unacademy. We have helped you in one way or the another to take your preparation of BITSAT to the next level. Yes, friends. So good to see again all of you. नमस्ते प्रवीण, हाय विक्रांत. यस, बिल्कुल नहीं यार हरप्रीत, आप लोगों के लिए कुछ भी. विक्रांत, हेलो. यस गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन. ऑल राइट, आई थिंक इट्स टाइम टू बिगिन. शुरू करें फटाफट. Yes, so मेरा नाम गणेश पवार है, बीटेक एमटेक from IIT Bombay with 10 plus years of teaching experience across different examinations, across different grades, right? So I'm here to guide you through different kinds of questions that come in BITSAT examination, which is the entrance examination for the prestigious BITS Institute, right? So yes, hi Komal. Bhargav, I think first of all you need to watch the Target 2020 BITSAT video. I have talked about a lot about BITSAT as in general, and in particular to stop procrastinating. I think I don't know. I cannot tell you right now, but first of all, to stop procrastinating, the basic idea is do not think much. Do not think much. Just go with the flow. Always make sure that whatever you have done, always tell this to your mind. It's basically a verbal communication with you yourself, with your mind. Because when does procrastination come? That happens when you are not clear with your ideas. Do you agree? Do you agree to me? You're not very clear with your ideas. That is when these kind of things happen. So I would suggest just one thing: just be calm and composed about it. Just believe in yourself that whatever you have studied is has already taken you to one level, and if you start procrastinating, it's always a negative thing that will pull you down. So whatever you are at a particular level, you do not want to come down, right? So it's always about how you prepare right now, that is going to affect your future. Now with respect to BITSAT examination, there is still some time to go. Don't you think so? There's still at least a couple of months for the exam to come by. So right now, whatever you do, whatever you think, however you progress is going to affect your future. So always send these positive signals to your brain that right now I am just going to believe in whatever I have done till now. Keep practicing, keep making sure that I work on my mistakes, I analyze my work, and always try to improve. That's all. Keep things pretty simple. All right. Good evening once again, everyone. There is Prabhakar, there is Ramendra, Shushma. Whoever is new, please hit the like button so that we can reach to as many people as possible. Share the video with your friends. Whoever is studying for BITSAT, that will help a lot. To reach many people. And if you feel that you like the way I teach, you like the way we try and analyze question, you like the way we talk about different approaches, how to exactly hit the +3 marks in for any kind of question, then please share this video with your friends so that even they can benefit from it. All right, there's Pratham, there is Ami, very good. Ami Gogari, quite a few new names. That's pretty cool, Baba. That's pretty cool. यस, उसके ऊपर भी कुछ मॉक टेस्ट होंगे जयेश.
यस गेमर्स जोन आ गया है. यस आयुष राज वेलकम ऑल ऑफ यू. अमोघ hello guys. Hi, hello. Dharmendra bhi hai. Wonderful. Rohan. Quite a few old names, quite a few new names as well. There's Funky Bro. Awesome. Ashutosh. Anjali Vyas. Hello guys. Awesome. Yes, BITSAT. Again, I have always tell this in most of my videos. BITSAT is definitely easier than JEE. BITSAT is definitely easier than JEE, but it has its own charm. It has its own charm because, yes, of course, this is an Unacademy subscription which you can pass on to your friends who are particularly studying for 12th standard, who have just entered 12th standard. They can use my code GP Live to get a 10% discount. Yeah, so I was talking about the BITSAT examination. BITSAT examination, the general thing is it's easier than JEE in terms of the quality of questions, the difficulty level of questions rather, but it's all about the amount of time in which you solve every question, right? जैसे हरप्रीत एकदम उतावला हो रहा है अभी. प्रीतम मौर्य, wonderful. Hi guys. Piyush, hello. Harsh, yes. So with respect to developing an approach for a new problem, Harsh, it's all about practice, Baba. That is why we are trying to explore different kinds of problem. Don't you think so? That's something that we have been trying in all our mock tests, and that is something that we will be continuing to do. ऑलराइट, तो चलो फटाफट शुरुआत करते हैं आज के पहले सेक्शन के साथ. और आज भी हम लॉजिकल रीजनिंग के साथ स्टार्ट करने वाले हैं. Yes guys, logical reasoning, as I have always told, first take yourselves to a level where your brain activity starts increasing, right? And I think logical reasoning or chemistry is a subject which you should start with ideally, so that your brain activity starts increasing, and then go to math when you are at your peak, so that you can come out with your best abilities to score the right answer in a maths question. Correct? So let's begin. Yes, and as usual, everyone, please think in mind, it's a balance of speed and accuracy. When I say balance of speed and accuracy, you need to solve the questions as fast as possible without making silly mistakes, without making errors. Yes, hello Deepak. All right, so here's the first question on your screens right now. Let me see who gives the correct answer to this question first. Right, let me see who gives the correct answer to this question first. And it's not about solving the question entirely and perfectly. It's all about hitting the right option, which by hook or crook, whatever method you use, कोई भी method आप use करो, सही answer आना चाहिए, सही answer आना चाहिए without making a mistake. Correct? So that's the whole idea. That's the whole idea. Yes, come on, let's see who can crack this code. Wonderful. चलो बढ़िया, देखते हैं. Yes, let's see, let's see. Yes, the correct answer is yes. Let's see who has taken the star. Come on, fatafat. Freedom, for that, all I would suggest you to do is attend our CBSE classes. That will clear a lot of your concepts, and they will definitely help you for ICSE as well. So the first star for this question has been bagged by Arav Khandelwal. Wonderful work here, Arav. The correct option in this question is option D. So let's see how I would do this question. I would not like to do this question step by step. Okay, all I would do is I'm again writing this only for you guys to understand, but otherwise in the examination I would not write this entirely. I would just like to think about it in a step by step manner. I mean, eliminating options. I can see that in both these, in all of these options, the first three letters are GIR, so I am not going to look for TRI के बारे में मैं देखूंगा ही नहीं. फिर उसके बाद मैं G देखूंगा और O के बारे में देखूंगा. Now G and O are not available in mathematics. G and O are not available in mathematics. So whatever options ka conversions you have here and here should not be there in the conversions of mathematics as well. Do you understand? पांचवा लेटर L है, L यहाँ पे नहीं है तो L पॉसिबल है. S जो है, S यहाँ पे है, S यहाँ पे है, तो जहां पे भी चौथे जगह पे S है, जहां पे भी चौथे जगह पे S है वो एलिमिनेट हो चुका. That is already been eliminated. Why? Because S corresponds to H, not to G. समझ में आ रहा है? H is equivalent to S, right?
So G is equivalent to something which is not there. G is equivalent to something which is not there, and S is there. So definitely B and C are eliminated. Does everyone understand that? Does everyone understand that, guys? Now what I would like to do, is I would like to go backwards. यहाँ पे अगर ये दो options बचे हैं, I would like to see कि यार ये VGIB है, ये भी VGIB है, तो last four letters नहीं देखना है, but उससे पहले there is L over here and there is N over here. So basically, which is the fifth last letter, which is M. So M is equivalent to what? From mathematics, we can see M is equivalent to N, yeah, and hence the correct answer is option D. Can we see that? Basically, just simply eliminating options, we have figured this out, right? Kushagra, अगर वैसा है तो आप भी स्टार ले सकते हो, बट चैट बॉक्स में मेरे को सबसे पहला आंसर आरव का मिला. In the chat box, I can see Arav has answered first, then there's Dark Knight, then there's Harpreet, और फिर उसके बाद आंसर सबने almost milliseconds के difference में आंसर दिया है. So again, as I said, this star वाला business is just to encourage you to answer fast as possible. अल्टीमेटली अगर आपको मान लो इस आज के सेशन में 4 स्टार्स मिल गए, बट आपका स्कोर जो है प्रोबेबली 8 या 10th रैंक्ड है सब लोगों में से, तो उसका कोई फायदा नहीं है, राइट? The star is just to motivate you to make sure that you are answering as fast as possible. Is everyone understanding that? Yes, Rekha, if you're asking me that question, then of course it is tremendously useful. And if you have just entered 12th standard, I started my plus course on matrices, and that's going phenomenally well. आज उसका तीसरा session है 9:30 बजे. So if you have not taken the plus platform, do take it. It will help for your boards tremendously. All right. all right Shreyari, I was see यार the notification के लिए आप YouTube चैनल पे रोज आके देखो, and from now on it will be like 2-3 days में एक बार mock test लेने का मैं सोच रहा हूँ, so it will be that way, right? And I generally try and post it on my previous mock test also, that today we are going to have a mock test. We try to reach as much as possible. So yeah. All right, everyone got the idea. How did we eliminate options? Using the blue, I was trying from the start. We eliminated B and C. Using the green colored ink, I went from the back and I figured out that the last four letters are same. M is L or M is N. Then we see from this that M is actually N. So option D is the correct answer. Has everyone understood this, the thought process clearly? Hello Nandini, hello Pranav, good to see everyone. Shrihari, यस ऑसम कुछ और नए लोग ज्वाइन इन हुए हैं, विच इज फिनोमिनल. सागर भी आ चुका है, वंडरफुल. मोहित कुमार भी आ चुके हैं. हेलो मोहित, वेलकम. राइट, हेलो देव. ऑसम गाइज. No, yaar, Pranav, not right now, but gradually I would definitely love to teach JE as well. That is in due course of time. But right now, I want everyone to be absolutely focused. एक star Arav ले चुका है. Let me see who else wants to get the next star. But at the same time, I repeat, it's about +3 and -1. Do not get the wrong answer. Right, everyone? Ready for the next question? Yes, come on, let me see that in the chat box. Let me see that energy. Let me see that fire. Awesome. Very good. Very good. Good to see that. Good to see that. Here's the next question on your screens. Now, hit it. This is one of the most difficult questions, honestly speaking. ये पूरे logical reasoning के set में, तो देखते हैं कौन सही आंसर ला पाता है, right? लेवल तो यार दोनों जगह सेम मैं ही पढ़ा रहा हूँ यार विशाखा, तो आई विल बी टीचिंग एट द सेम लेवल. डोंट यू थिंक सो? द पर्सन डजंट चेंज. इट्स जस्ट दैट द मेथोडोलॉजी ऑफ द प्लेटफॉर्म डेफिनेटली एनरिचेस द वे द कंटेंट रीचेस यू, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ही इतना मजेदार है कि वहां पे हम लोग काफी ज्यादा टाइम दे पाते हैं, काफी इंटरेस्टिंग टेक्निकल टूल्स यूज कर पाते हैं, टेस्ट सीरीज होता है, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं. देयर इज अ ओपन कम्युनिकेशन. इट फील्स लाइक आई एम सिटिंग विथ यू गिविंग 1-to-1 coaching. So it's phenomenal, and trust me, the prices are incredibly low, reasonable right now because of the crisis. So you can take the advantage of this because the prices can increase. All right, now as I said, it's going to be very. This one is one of the trickiest questions, and of course, जिसको भी आंसर गलत मिला है वो प्लीज -1 ले लीजिए, क्योंकि you need to go through a learning curve. Yeah, you need to go through a learning curve. I've already got the star. काफी ABCD सारे options दे दिए हैं बच्चों ने अलग अलग. बट इस सवाल का स्टार प्रणव दत्त ले गया है. प्रणव दत्त has got the star for this question. So basically Arav Khandelwal has taken 1 star. Pranav Dutt has taken the 2nd star. The correct answer to this question is option D. Pranav, can you tell me in a few words in the chat box that yaar, how did you get this answer? How did you get the answer option D? Can in a few words you tell me this? Come on, फटाफट देखते हैं. क्या आप एक फ्यू वर्ड्स में बता सकते हो कि कैसे ले आए हो आप ये आंसर? यस, क्विकली.
right? This is an interesting question. This is a really interesting question. So I would really like to know the thought process behind this. Yeah, fantastic work, honestly speaking. All right. या I'll explain, सुषमा, डोंट वरी सुषमा, मैं बताऊंगा कैसे डी आया, बट फिर जानना बहुत जरूरी है कि स्टेप बाय स्टेप। आई वुड रियली लाइक टू नो प्रणव ने डी कैसे निकाला, या फिर किसी किसी और ने भी जिसने भी डी लिखा है, हाउ डिड यू गेट दैट इट डी? Oh no, dates are squares. Oh no, it can't be that silly. Come on, these are dates. Otherwise I would have said 1, 2, 3 and 9. No, then you would have said that okay, 3 is the odd man out. Why have the dates been given? It's not as easy. BITSAT में कभी कभी क्वेश्चंस कुछ डिफिकल्ट आ जाते हैं, राइट, जो लेंदी भी होते हैं, करेक्ट? Right now Mohit is saying 145 kilometer plus bouncer. Now this is interesting, trust me, जब मैंने भी ये सवाल सॉल्व किया था, this is a past year paper का question. Yeah, it was not that easy. It was not that easy. I'll tell you what to do. Does everyone have a note, a calendar in your phones? Does everyone have a calendar in your phones? Come on. Of course, you would not have a mobile phone while solving the question. But अगर आपके पास एक कैलेंडर है फोन में, तो फटाफट 1 जनवरी 2002 छोड़ दीजिए, 2020 देख लीजिए. ऑलरेडी यू एक्चुअली कैनॉट लुक 2020 बिकॉज 2020 इज अ लीप ईयर. 2002 इज नॉट अ लीप ईयर. 2002 इज नॉट अ लीप ईयर. ठीक है. सो जो डेट 1 जनवरी, जो डे 1 जनवरी का होगा, वही डे 2 अप्रैल का आएगा, वही डे 3 सितंबर का आएगा, बट वो डे जो है 9 अक्टूबर का नहीं आएगा. इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है. ठीक है. थिंक अबाउट इट. एंड वॉट एवर योर डेट, इट हैज टू बी 7 का मल्टीपल. 7 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट? 7 का मल्टीपल होना चाहिए. ध्यान से देखो, जनवरी में कितने मंथ्स होते हैं? जनवरी में कितने मंथ्स होते हैं? जनवरी में कितने डेज होते हैं? देयर आर 31. फरवरी में कितने डेज होते हैं? इट इज नॉट अ लीप ईयर. 2002 नॉट अ लीप ईयर. या 2002 इज नॉट अ लीप ईयर. सो फरवरी में कितने होते हैं? 28 डेज होते हैं, राइट? मार्च में कितने होते हैं? मार्च में कितने होते हैं? 31. अप्रैल में कितने होते हैं? 30. मई में कितने होते हैं? 31. जून में कितने होते हैं? 30. अगस्त में कितने होते हैं? 31. सितंबर में कितने होते हैं? सॉरी, जुलाई में मैंने मिस आउट कर दिया. जुलाई में होते हैं 31. सितंबर में कितने होते हैं? 30. दिस मच इज गुड इनफ. दिस मच इज गुड इनफ. तो चलो फटाफट कैलकुलेट करके देख लेते हैं. आई एम टेलिंग यू कि हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू कैन वेरी इजीली फाइंड दिस आउट. थिंक अबाउट इट. अगर फर्स्ट को मान लो संडे है, अगर मान लो फर्स्ट को संडे है, वी डू नॉट नीड टू नो एग्जैक्टली क्या डेट है. इफ 1 जनवरी इज संडे, देन कैन आई से 1 plus 8, 8th January is also Sunday. Yeah. Can I say 1 plus 8, 8th January is also Sunday? Yeah. 8 plus 7, 15 January is also Sunday. 15 plus 7, 22 January is also Sunday. 22 plus 9, 29 January is also a Sunday. करेक्ट? उसी प्रोसेस में जाना है, बट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इस तरीके से. करेक्ट? कैलकुलेट नहीं कर सकते. इसीलिए हम क्या करेंगे, विल फिगर आउट कि यार जनवरी में 31 डेज हैं, फरवरी में 28 डेज हैं, मार्च में 31 डेज है. इन तीनों मिला के कितने डेज हैं? तीनों मिला के कितने डेज है? मैं जनवरी को 30 मानूंगा क्योंकि फर्स्ट इज अ संडे. करेक्ट? फर्स्ट इज अ संडे, तो फर्स्ट को हमें इंक्लूड नहीं करना है. फर्स्ट के बाद 30 डेज है. सो इफ वी कैलकुलेट 58, 58 plus 1, 59, 59 plus 3, 59 plus 30 is 89. ठीक है. तो 89 के बाद 1st of April is 90 and 2nd of April is 91. Now you would notice that 91 is nothing but 7 into 13. So it's exactly 13 weeks later. Exactly 13 weeks later, you would get this option B, and hence it will be a Sunday again. It will be a Sunday again. Correct? Now यहाँ पे इस पे क्लोज हो गया. अब मैं वापस शुरू से सारे डेज इकट्ठा कर रहा हूँ. ठीक है. 2nd of April को संडे था. अब बचे कितने दिन? 28 डेज हियर बचे. 28 डेज हियर. 28 plus 31. 28 plus 31 is how much? 28 plus 31 is 59 again. 59 plus 30 gives you 89. 89 plus 31. 89 plus 31 would give you 120. ठीक है. 120. And then August के 30 days. August के 30 days है. That is 150. So 150 जब ये पूरा हो जाता है 3rd September, 151, 152, 153, and 153 you would see is a multiple of 7. 153, 154 आता है आई थिंक 3rd September को. अगर आप देखो कि वो 7 का मल्टीपल आएगा, एक बार ध्यान से देख लो. ठीक है. या तो हम एकदम शुरू से भी करके देख सकते हैं, 1 सितंबर से शुरू से भी करके देख सकते हैं. देखते हैं कितने डेज आते हैं, राइट? देखते हैं कितने डेज आते हैं.
30 plus 28, ठीक है, 30 plus 28 for February, plus 31 for March, plus 30 for April, plus 31 for May, plus 30 for June, plus 31 for July, plus 30 for August. Let's add all of this up. Okay, if you add all of this up, you will notice that 30 30 30 30 128 हो गया, 128, ये चारों को ऐड करके 120 हो गया. ठीक है, now if you add this and this, it will be how much? 93, 93, 213, 213, 213, 8, 241. ठीक है, now 241 आ गया, 241 आ गया, 241, 242, 243, yeah, 243, and yeah, some calculation mistake. This will basically come as a multiple of 7 after the 1st of Jan. समझ में आ रहा है? ठीक है, ऑड मैन मतलब ये संडे नहीं आएगा, अगर ये संडे है ये भी संडे है आएगा, ये भी संडे आएगा, बट डी नहीं आएगा. ठीक है, डी विल कम एज अनदर डेट. एवरीवन क्लियर विद दैट? या एवरीवन क्लियर विद द थॉट प्रोसेस? या sure, yeah, Bitan, we are working on that for a crash course on BITSAT on the Plus platform. Yes, that will be really helpful to everyone, and that is why we are trying to understand the traction. Are we guys, really motivated towards that? Because we do not want to establish, because see, once we go on the Plus platform, it's going to be a proper settled course, and we want good enough traction for that, and that is why we are figuring out, right? हरप्रीत, डू नॉट वरी, एक बार वापस शुरू से ट्राई करने की कोशिश करते हैं. चलो, तब तक आप काम करो. कंफर्म करने के लिए ना अपने मोबाइल में कोई भी एक ईयर के लिए स्टार्ट करो, कोई भी एक ईयर में. लीप ईयर नहीं होना चाहिए, 2020 एक लीप ईयर है. ठीक है, हाँ यार विशाखा, कोई तो एक मिस्टेक हुआ है बट प्रोसेस सेम है, और ये मिस्टेक आपके एग्जाम में हो सकती है, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट अबाउट इट, राइट? यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट अबाउट इट, राइट? So 1 plus 7 times a multiple, a natural number should come. That many number of days will, अगर नेक्स्ट डेट है तो वो सेम डे आएगा. समझ रहे हो? जैसे 2 अप्रैल के लिए आया वैसे ही 3 सितंबर के लिए भी आएगा, बट 9 अक्टूबर के लिए नहीं आएगा. ऑल दीज 3 days will be same. Has everyone understood the thought process, right? So yeah, whoever feels that a crash course for BITSAT is something that you would really love on the Plus platform, please message that. Please put that in the comment box. That definitely helps our management system also to know that, all right, we can definitely put up a course, and that's going to be a phenomenal course. All right. Yeah. This is where the mistake was. August was actually 31 days. My bad. So ये थोड़ा सा mistake हुआ. Thanks a lot for pointing that out. Yeah, that is the mistake. But अगर ये particular, first of all, tell me, has everyone got the process correct? Yeah. No, you cannot do that. No, you cannot do that. That's a good way to think about it, Bhargav. That's a good way to think about it. But see, the most ideal way that they want to think you on these lines is that what is the date, right? What you are trying to do is you are trying to find out, you are trying to search out something that works, but it's not working out here. All right, so let's think about it that way. Or right, for that matter, what you are saying also makes sense. 1 comma 1, 2 comma 4, 3 comma 9, and 9 comma 81 hona chahiye, but October is not 81st month. You can think about it that way. But yeah, that's cool. Yeah, good to see that. All right, everyone ready for the next question? Awesome. Awesome. चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. हियर वी गो on your screen with the next question. Come on, फटाफट. This is an interesting question and a question that is expected in the BITSAT question, BITSAT exam. इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग काफी. ठीक है, जहां पे it's the absolute logic. You need to understand the scenario, right? There's a girl Neetu pointing to a man in the park. Neetu is saying, pointing to a man in the park. Neetu is saying that he is the son of my grandmother's only daughter. He is the son of my grandmother's only daughter. If the man in the park is not the brother of Neetu, then how is Neetu's father related to the man's mother? Wow, right? बिटसैट मेंस यार, मेंस रिलेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिटसैट से इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? नीतू इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन एंड सेइंग दैट ही इज द सन ऑफ माय ग्रैंडमदर्स ओनली डॉटर. ध्यान से सोच के देखो. कम ऑन, लेट्स सी हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट. फटाफट.
Let's see who scores the star and who's losing marks. Guys, अगर गलती से आंसर गलत आ रहा है तो please -1 लो. That will help you analyze where you are doing your mistakes so that you can go to the video after the paper again, download the PDF, watch what all has happened and correct your mistakes. That's what is very, very important, guys. All right. Right, so the star in this question has been taken by Jayesh Panchal. Yes, very good, Jayesh. Wonderful work. The correct answer is brother. Option D is the correct answer. Let's see how. Right, he is the son of my grandmother's only daughter. So basically, नीतू की जो grandmother है, ठीक है, नीतू की जो grandmother है, उनकी अकेली डॉटर है. ठीक है, देर इज ओनली वन डॉटर, देर इज ओनली वन डॉटर, या टू दिस पर्टिकुलर लेडी ग्रैंड मदर. ठीक है, सो आई एम ट्राइंग टू मेक लेवल्स फॉर हर ओनली डॉटर. ही इज द सन. ठीक है, he is the son, this guy is the son for grandmother's only daughter. Right, now if the man in the park is not the brother of Neetu, अगर ये लोग भाई बहन नहीं है, इसका मतलब Neetu is not the daughter of that particular lady over here. Yeah, she is not the daughter. Right, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, this particular woman, the grandmother over here, has a son as well. Right, because there is only one daughter, has been clearly mentioned. The grandmother's only daughter, he's the son of the grandmother's only daughter. Right, means that means the grandmother has another son or more than one sons. Right, hi Chaudhary Anand. Right, और नीतू उनकी बेटी है. Right, now how is Neetu's father related to the man's mother? They are brother and sisters. Right, so Neetu's father is basically the brother to the man's mother. Clear? Logical सा question है. राइट, लॉजिकल सा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, काफी इंटरेस्टिंग है. बट यस, आई होप एवरीवन हैज गॉट इट करेक्ट. एक बार समझने की कोशिश करो, थॉट प्रोसेस समझ में आया. अगर आंसर सही नहीं आया तो इट्स फाइन, वी आर लर्निंग गाइस, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सो यू टेक इट इन दैट वे. यस, क्लियर, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Yeah, try and take it in a positive way that we are learning through this process. Right, and as I said again, if you think a plus platform पे BITSAT का crash course बनता है तो comment box में डालो, it will definitely encourage us. Right, try and go through the entire mock test. If you think more mock tests like this would benefit at a plus level, at a plus platform level, with a nice package of test series. We are packaging a 10 test mock series, absolute 10 test mock series, अच्छे से proper BITSAT level के mock series, which you have to give dedicatedly, and also analysis on that, and proper sessions जहाँ पे हम shortcuts सिखाएंगे, अलग अलग टाइप के questions लेंगे. तो please put that in the comment box. All right, yes, hi Himang, awesome. Sneha, very good. Ram, yes, awesome. चलो आगे बढ़े. Hi Aditya, चलो फटाफट, कोई बात नहीं. रमेंद्र -2 बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े से टफ क्वेश्चंस थे, बट दिस इज द लर्निंग कर्व गाइस, हम इसी से सीख रहे हैं. ऑन दैट नोट, हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन on your screen. Let's see, we have 3 different stars till now. We have 3 different stars. Here's the next question on your screen now. Come on, let's see who can crack this. I think this is doable. देखते हैं कौन ये स्टार क्रैक कर पाता है फटाफट. Who has till now scored how much? किस ज्यादा किसको मार्क्स आए? 3 क्वेश्चंस हुए हैं, if I am not wrong, 3 क्वेश्चंस हुए हैं. Right, yes Pranav, sure, we'll try to do that. Of course we are planning that. It's just that we need to gain traction. कितना ज्यादा और लोग आ रहे हैं, कितना ज्यादा लोग पसंद करेंगे ये चीज, that is what we are trying to figure out. Right, and that is why these mock tests are for. Right, come on फटाफट, let's see who can crack this question. This is definitely doable. Let's say this is your home, this is the starting point. Right, this guy is facing east, and from east he is moving left. ठीक है, let's see who scores this. यार काफी केयरफुली आंसर्स देने हैं, काफी केयरफुली, और एक ही बार आंसर देना है बाबा, एक ही बार आंसर देना है, बार बार नहीं. तो सोच समझ के, सिर्फ स्टार के पीछे नहीं भागना है, करेक्ट आंसर भी चाहिए. दैट इज व्हाट आई वाज ऑलवेज टेलिंग यू, हैव अ बैलेंस ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी. आराम से आंसर देते बैठोगे तो 150 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे 3 घंटे में. ठीक है, और साथ ही साथ आंसर करेक्ट भी लाने की कोशिश करना है. राइट, सो द स्टार टू दिस क्वेश्चन गोes to Shri Hari Shatrughan. Wonderful work, Shri. The correct answer to this question is indeed option C. Right, he's facing east. From here
from east he is turning left, right? तो यहाँ से east को face करके, यहाँ पे face करके turning left 5 kilometers. Now from here, now he is facing north, facing here north, is going 12 kilometers. Now he is facing east again. Yeah, from here he is turning left again 5 kilometers, and then again to his right 12 kilometers. So this is the total journey that you can see. So this is 5, this is 12, this is 5, this is 12. Now can you see that the total distance hence would be 13 plus 13? Option C hence is the correct answer. Everyone clear with the thought process, guys? सिंपल क्वेश्चन था, बट अगेन ऐसा ऐसा क्वेश्चन था जहां सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं. करेक्ट? एवरीवन क्लियर विद दिस? फटाफट. Awesome, awesome. Good to see that. Good to see that. All new people, whoever have come a bit late, please put a like on the video, right? Gain traction, share it with other people so that more and more people join in. Fantastic. Ready for the next question? Come on, let me see that Josh. The next fifth question of the logic section. Fatafat on your screens now. Hit. Come on. गुड वर्क आदित्य, वंडरफुल वर्क, वंडरफुल वर्क. चलो फटाफट देखते हैं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और बिना मिस्टेक की आंसर देने की कोशिश करो. 30 सेकंड्स में ये क्वेश्चन होना चाहिए और हो सकता है. ट्रस्ट मी, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन 30 सेकंड्स. फटाफट. Then 0 Vikrant. If you write the correct answer, if you post the correct answer, +3. If you give a wrong answer, wrong option, then -1. If you do not attempt the question, 0 marks. And at the end of the paper, please analyze your marks. आंसर्स अपने कहाँ कहाँ गलती किया हुआ है उनको वापस वीडियो पे आके देखो, पीडीएफ में देखो किस तरीके से सॉल्व किया है. दैट विल हेल्प अ लॉट, right? That will help a lot. This is called how to get better in the examination, basically what we call as analysis. I'm really proud of you. I'm really proud of you, bro. The second star goes to the same person. The first time it has happened in today's exam, today's mock test, Shriyari has gained the second star. Back to back stars to Shriyari. Fantastic work, Shri. Fantastic work. Option D is indeed the correct answer to this question. I would not even take more than 20 seconds to solve this question. This is a pure observation question. Okay, pure observation question. I'll see, just go through option. Then I suddenly see a T over here. And there is no T in superimposable. That's exactly what they have said. Which words cannot be formed from the letters used in superimposable? Option D is the correct answer. End of story. सही है कि नहीं? सही है, बहुत बढ़िया. क्योंकि T superimposable में नहीं है. This is just open your eyes and just be alert. Absolute alert वाला question है ये. ठीक है? Ramindra, not now. You'll not find the PDF now. Once the session ends, after like 10 to 15 minutes, you'll get the PDF of this session there in the description. All right. Are we ready for the next question? Come on, guys. थोड़ा सा speed बढ़ाते हैं, धड़ाधड़. ठीक है. Maths के भी at least 10-12 questions करने हैं. Come on, फटाफट. Awesome, awesome, awesome. बहुत बढ़िया. Here we go with the next question on your screens. Come on, a 15-20 second question, but do not make a mistake. Come on. Let's see who can crack this one. A sculptor is to chisel ... Author is to what? We just need to connect the dots. Come on, फटाफट. देखते हैं कौन सही आंसर ला पाता है. सही है फटाफट. Let's see who can crack this one. Sure, Pranav, definitely. A sculptor is to chisel, author is to what? फटाफट. अंकी ब्रो, you were what? It was me sir बोल रहे हो कौन? रमेंद्र, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमें बस ये फिगर आउट करना था कि कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है, राइट? Yes, we've already got a star. I think it's your second star. Isn't that it? Yes, Pranav has scored the star in this question. Option D is indeed the correct answer for this question. Fantastic work, Pranav. I think you are the second person to get the second star. So that's a good race happening. Pranav has scored 2 stars, I think. Shri has scored 2 stars. Right? Sculptor का tool होता है chisel. A sculptor sculpts using a chisel. An author writes using a pen. Right? Now don't say an author writes using a paper because he writes on a paper. Right? So please try and understand the pen is the tool of the author. So option D is the correct answer. Absolute logic question है. ठीक है? Everyone clear? Very good, guys. Very good, guys. Ready for the next question? Another question of this format. You will see this kind of a question pretty pretty regularly in the BITSAT examination. एक आध question आ ही जाता है इस तरीके का. ठीक है? Chisel is a tool. विशाखा generally सुना होगा.
राइट। डीजल एक हथियार होता है, औजार होता है जिससे कि स्कल्पटिंग कर सकते हो, ठीक है। हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फटाफट लेट्स सी हु कैन क्रैक दिस वन, अनदर सिमिलर वन। अ बुक इज टू बुक केस, सो क्लोथ्स इज टू व्हाट? कम ऑन गाइस, awesome awesome awesome, let's hit it, let's see who can score the next star in this question. कोई बात नहीं यार सुल्तान, जीते रहो, स्टार ले लो आप, चाहिए तो बिंदास। पॉइंट ये है कि +3 ला पाते हो या नहीं। और एक स्टार ले गया भाई, और एक स्टार। श्री हरि एंड प्रणव आर लाइक नेक टू नेक वर्किंग ऑन दिस। guys, be dedicated, try to get the answers right, do not look at the comment box first, try to solve the question. The whole idea is, can you get the questions, the answers correct? Okay, the star is a bonus which is basically increasing your efficiency in the exam. Think about it this way, यार आप बेटर होते जाते हो in terms of mark scoring. If you attempt more questions, definitely you are going to score more, right. So yes, correct answer is indeed option D here again, wardrobe, right? क्योंकि बुक को बुक केस में रखा जाता है, क्लोथ्स को कहाँ रखते हैं हम लोग? कबर्ड में। कबर्ड क्या होता है? wardrobe. So option D is the correct answer. Awesome, good to see that energy, good to see that energy, good to see that passion to score right first, right? That basically means कि आप speed के लिए बहुत you focused हो, and that's very essential for the BITSAT kind of an examination. I can say that absolutely through experience. After scoring 432 in the BITSAT examination, I know that how important speed is. You cannot lift your pen from the paper and your mind from your from basically working. You have to be constantly at it, you have to constantly put your pedal on the accelerator. गाड़ी तेज भागती रहनी चाहिए बिना कोई गलती करे. All right, on that note, here's the next question. Come on, let's see who can crack this one. फटाफट read this, it's an analysis question. Let's see who can crack this question. Fatafat, very good Pranav, very good Shri. Come on, let's see. Can Shri take the third star and match Pranav? Come on, I think it's 3-2. Come on, others, come on. Join the party, join the game. There's more stars waiting in math section too. Fatafat. All right, waiting. Come on guys, Fatafat. ऑल राइट, आई एम नॉट श्योर स्टार ये नंदिनी को देना चाहिए या जैक स्पैरो को देना चाहिए, आप में से किसी एक को ही। दीपिशिका ने भी करेक्ट आंसर दिया है। नंदिनी, वर यू सेइंग दैट द आंसर इज ए राइट एट द स्टार्ट? इफ यस देन यू टेक द स्टार। एक काम करते हैं, दोनों को दे देते हैं, नंदिनी भी स्टार ले जाएगी, जैक स्पैरो भी ले जाएगा। ये आंसर, करेक्ट आंसर यहाँ पे ए राजू है, राइट। यू कैन सी वसंत इज टॉलर देन मनोहर, वसंत इज टॉलर देन मनोहर बट नॉट एज टॉल एज राजू। इसका मतलब राजू जो है वसंत और मनोहर से टॉलर है, क्वाइट नेचुरली। वसंत इज टॉलर देन मनोहर बट नॉट एज टॉल एज राजू, सो राजू इज डेफिनेटली टॉलर देन वसंत। नाउ जयंत इज टॉलर देन डूना बट शॉर्टर देन मनोहर. Jayant is taller than Duna but shorter than Manohar. Does this order make sense now? Who is the tallest in the group? Raju. Clear, simple analysis. Very good. Dipshika, even you get a star. Fantastic work. So the speed is bang on. बहुत ही बढ़िया स्पीड से काम कर रहे हैं लोग, बट अभी धीरे धीरे एक्यूरेसी पे भी काम करो। और जो लोग करेक्ट आंसर्स ला रहे हैं बट थोड़ा सा लेट आंसर दे रहे हैं, धीरे धीरे स्पीड पे भी काम करो. सो दैट इज व्हाट आई कॉन्स्टेंटली टेल यू, देयर नीड्स टू बी अ राइट बैलेंस. Yeah, of course you will not be able to get each and every answer correct, each and every question correct, but you need to be minimizing the number of wrong answers. Maybe कि यार probably 20 या 25 क्वेश्चन में से एक आंसर गलत आ गया, ये टारगेट होना चाहिए, ठीक है. Awesome. Here we go with the next question, guys. On your screens, फटाफट another family tree relation type का question. देखते हैं कौन solve कर पाता है ये. Yeah. यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है. आई थिंक दिस शुड बी M. This is not 11. This should be M, I think. Q's mother is the sister of M. And daughter of S. N is the daughter of R and sister of M. Wow, this is crazy. I don't have the answer to this. I'm thinking with you guys. Q's mother
is the sister of M. Is the sister of M. Yeah, and daughter of S. So S is basically in the upper tree. S is basically in the upper tree, right? And there is no clarity about M, right? M can be a man or a woman. N is the daughter of R and sister of M. N is the daughter of R. And the there is a bit of a issue over here. ना यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है डेटा इनएडिक्वेट भी हो सकता है सो लेट्स लीव दिस क्वेश्चन हियर गाइस लेट्स लीव दिस क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है सो यस गाइस आर वी रेडी फॉर मैथमेटिक्स फटाफट कोई बात नहीं आज जितना भी हमने पढ़ा आई थिंक इट वाज गुड इनफ क्वाइट अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग काफी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे आई थिंक स्पेशली द फैमिली ट्री क्वेश्चन जो हमने एक बार पहले देखा द टॉल वाला क्वेश्चन द बुक केस वाला क्वेश्चन द स्कल्पटर चिजल वाला क्वेश्चन the calendar question, different kinds of question. All right, yeah. My bad. We'll go through that Dipshika later, but I think it's a bit confusing, especially because of that M. Okay, especially because of that M and everyone is having different answers. So right now, let's go into maths. All right, everyone ready for mathematics? Fatafat. Everyone ready for mathematics? Come on, let's see. Come on, let's have a fresh start. Let's have a fresh start into mathematics, and I'm going to again start with new stars. Let's see how many of you can score the max numbers of stars and count your marks. Mathematics का अलग से अभी ठीक है mathematics का stars अलग से और marks अलग से गिनो. Are we ready for the first question? Let's try and solve each question inside 1 minute. Here we go with the first question on your screens now. Hit it, फटाफट. Come on, guys, beat me. It's an equilateral triangle. I am also solving it with you guys. Yeah. Let's see how fast can you solve this? Yeah. Awesome. Badhiya. Equilateral triangle hai, so we have enough data about it. Yes, so the first star in the mathematics section, goes to Pranav again. Wonderful work, Pranav. Pranav, you are doing pretty good. So AD is the height. AD is the height. Can we see that, guys? Yes, Dipshika, that's the correct answer. जो भी गलत आंसर दे रहे हैं, please try and make sure that you understand the concept over here और क्यों गलती हुआ. That's very important, guys. That's very, very important. AD, I can find out using the perpendicular distance formula. Correct? Perpendicular distance formula क्या बोलता है? जो coordinates हैं point के, उसको equation में डालो. So 2 plus minus 1 minus 2 upon root of a square plus b square coefficients of x and y, and hence you can see that 2 minus 1 1 1 minus 2 is minus 1 upon root 2. So mod lena hai, so 1 upon root 2 is the height, 1 upon root 2 is the value of AD. Now we apply basic trigonometry. And we say that sine B, which is sine 60 degrees, is opposite 1 upon root 2 upon hypotenuse, which is the length of the side of the triangle. Correct? Therefore, I can say that root 3 upon 2 is equal to 1 upon root 2a. Solving this would give you a is equal to, 2 upon root 2 root 3, which is basically simplifying to root 2 upon root 3, and this is there sitting nicely in option D. Right? So yes, silly mistake, but we are learning. जिसने भी mistake किया है, do not get demotivated. आज के questions थोड़े से interesting है, थोड़े से tough भी है, but there is a lot to learn from this. That's the whole point. Exam hall में बैठ के हमें mistakes नहीं करने हैं. Are we ready for the next question? Come on, friends. Let me see that Josh in the chat box. क्या हम ready हैं? Yes, very good, Harsh. That's correct. Awesome. Very good. Good to see that passion. Here we go with the next question of the mathematics section. एक star Pranav ले चुका है. Let's see who can get the next star. Awesome. That's the Josh. फटाफट on your screens. फटाफट.
On Plus platform, yes, Pranav, definitely. As I said, on the Plus platform, there will be too much space, too much time, and there would be you'll feel almost like we are interacting on a personal basis, right? Come on, guys, fatafat. Yo, 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 let's see who can crack this one, right? I'll say that, I'll just mark these three as equations one, equation two, and equation three, right? One and two, solving one and two, solving 1 and 2 you get what? Solving 1 and 2 you get what? X as minus 2. Yeah, x as minus 2 and y as 8. Is that correct? Yeah. Now solving 1 and 3. Solving 1 and 3 you get what? Solving 1 and 3, I'm doing the calculations in my head. 2 minus 1 कर लिया मुझे, x equal to minus 2 आ गया, and then I replugged and got the answer. When I solve 1 and 3, I subtract, I get y is equal to minus 1. I get y is equal to minus 1. I resubstitute it and I get x as 7. Okay, now with these 2 points you can plug them in the options and check out which one works. That is one way to do it, right? Or 2 and 3 भी सॉल्व करके देख सकते हैं हम लोग. 2 and 3 भी सॉल्व करके देख सकते हैं. So this is 8. 3x is equal to 3, so x is equal to 1. X is equal to 1 and 1. So that will give me y as 2, right? So we need to check कौन से options में ये तीनों points fit बैठ रहे हैं, right? Pretty easy to understand that. Pretty easy to understand that because the equation of the circle circumscribing the triangle. So let's say this is your triangle. The circle which circumscribes the triangle has to pass through all these 3 points, correct? Has to pass through all these 3 points, right? So let's simply put 1 comma 2 first. 1 square plus 2 square is 1 plus 4, which is 5. 5 plus 17 is 22. 22 plus 38, 22 plus 38 is 60. 60 minus 50, option A is eliminated. ऐसे ही करके आगे भी हम डालेंगे, ठीक है? 1 square plus 2 square, 1 plus 4, 5. 5 plus 17, 22. 22 minus 38 minus 16. This is also gone, right? This is also gone. Come on, fatafat. 1 plus 4, 5. 5 minus 17 minus 12. Minus 12 and minus 38. Minus 12 and minus 38 is minus 50. Minus 50 minus 50 is does not satisfy. Option D is the correct answer, guys. Gamer Zone wins the star in this question. Gamer Zone ने सबसे पहले आंसर दिया, right? Very good, very good. समझ में आ रहा है सबको हाउ वी डिड दिस प्रॉब्लम, राइट? दिस इज अ लेंदी प्रॉब्लम बट ट्रस्ट मी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं. पिछले मॉक टेस्ट में भी मैंने बोला था दैट वी हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ दिस एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स डू हैपन, राइट एवरीवन, राइट? समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है? ये इतना टाइम नहीं है कृष्णा जी, ध्यान देना है अच्छी चीजों पे, है ना? All right, guys. All right. Come on. Ready for the next question? Fatafat. On your screens, the next question. Here we go. Come on. Let's try this one. This is a conics question. This is an important question. Yes, Freddy is. कौन से वाले डीपीपी ऑफ डिटर्मिनेंट? कहाँ के आशीष? प्लस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो क्या? प्लस प्लेटफॉर्म वाले डीपीपी की बात कर रहे हो? नहीं, प्लस प्लेटफॉर्म पे तो डिटर्मिनेंट शुरू नहीं हुआ है. आप यूट्यूब वाले चीज की बात कर रहे हो, करेक्ट? रात को एक बार मैं YouTube का वीडियो खोलूंगा, तब कमेंट बॉक्स में आपने डाल दिया है क्या आंसर? नो वरीज कुणाल, दैट्स हाउ वी लर्न. नो वरीज हरप्रीत, लेट्स वर्क ऑन दिस. आज कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं तो होपफुली इंटरेस्टिंग होगा सेशन. नंदिनी, आप वो सर्कल्स वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? नंदिनी, आप वो सर्कल्स वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या? अगर सर्कल्स वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो तो ये बस समझना कि ये ट्राइंगल बन रहा है और वो ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाल लिए. वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है सर्कल, तो वो तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेटिस्फाई करना है. हमने बस एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीन चीजों को एलिमिनेट कर लिया, राइट? नाउ वी हैव एन एलिप्स, x square upon a square plus y square upon b square is 1 and b is end of the minor axis and b is one end point of the minor axis. So this is b, let's say ये minor axis है आपका, right? S and T are the foci. S and T are the foci. So
and this is given to be as an equilateral triangle. This is given to be as an equilateral triangle, and eccentricity has been asked to us. Right now, we need to understand that this length is b, this length is b, and this length is ae. Distance is ae, and this angle is 60 degrees. Now can I apply tan 60? Can I apply tan, because opposite or adjacent hai? Tan 60 is b upon ae, correct hai? Tan 60 is b upon a, which is root 3. Tan 60 is root 3. So can I square this equation now? And what do I get? I get b square equal to 3 times a square e square. Okay? 3 times a square e square. Now I know that b square का formula क्या है? B square का formula है a square into 1 minus e square. Correct? So a square into 1 minus e square is 3 a square e square. ये आपका equation आ गया जहां पे आपने a square और b square को get rid कर लिया. Right, so we have 1 minus e square as 3 e square, solving which we get 1 as 4 e square. E square is 1 by 4 and e is hence plus minus half, giving you the correct answer as half, because eccentricity cannot be negative. Right, everyone clear with this? Right, everyone clear? I love you, Freddy's Bella. Guys, please focus. Come on, let's not be passive over here. Let's absolutely focus on the right thing. Yeah, जिस purpose के लिए हम यहाँ पे आए हैं. Come on guys, please focus. Right, let's not deviate. Everyone clear with this? Yes, problem clear है? Right, yes, awesome. Chalo, ready for the next question? Awesome. Here we go with the next question on your screen. चलो फटाफट सॉल्व करके दिखाओ. ये फटाफट सॉल्व करके दिखाओ. ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है. Guys, absolutely ignore and absolutely focus on the content over here. Right? देखते हैं कौन स्टार लेके जाता है ये क्वेश्चन में. फटाफट. Tan 20 degrees is equal to P. Tan 20 degrees is given as P. Right? Tan 160 minus tan 110 upon 1 plus tan 160 tan 110 is what we got to find out. All right? इंटरेस्टिंग. काफी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है ये. यस, ऑसम. चलो फटाफट फोकस करते हैं कैसे सॉल्व करना है. देखते हैं. tan 160 को हम लिख सकते हैं tan 180 minus 20. राइट, tan 160 को हम लिख सकते हैं tan 180 minus 20. 110 को हम लिख सकते हैं 90 plus 20. So can you see we are able to convert everything in terms of 20. That is going to benefit us a lot, right? That is what is going to help us simplify this in terms of P, which is tan 20 into tan of 90 plus 20. ये बात समझ में आ रही है जनता? Right? Now this will give you what? Tan of 180 minus theta is minus tan theta, so minus tan 20. सही है? Tan of 90 plus theta, tan of 90 plus theta is minus cot theta, so plus cot 20, which can be written as 1 upon tan 20, which we'll write later. ठीक है, 1 plus tan of 180 minus 20 हमने पहले ही बोल दिया कि minus tan 20 हो गया. ठीक है, और tan 90 plus 20 is minus cot theta, तो minus cot 20. ठीक है, अब डिनोमिनेटर हम देख रहे हैं कि यार ये जो एलिमेंट है माइनस माइनस प्लस दे देगा, बट tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज ऑल्सो 1, तो डिनोमिनेटर तो आपका स्ट्रेट अवे 2 हो गया ना भाई. डिनोमिनेटर तो स्ट्रेट अवे 2 हो गया, और न्यूमरेटर में माइनस पी प्लस 1 अपॉन पी आ गया. सही है, ऑल यू हैव टू डू इज सिंप्लीफाई दिस, तो माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p इज योर आंसर. इसकी खोज करो क्वेश्चन बॉक्स में, और आपको ऑप्शन बॉक्स में आपको दिखेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. यस गाइस, आर वी क्लियर विद दिस? कम ऑन. 1 minus p square upon 2p, basic trigonometry apply किया है, allied angles property. Are we clear with this? Yes guys, are we clear with this? Yes guys. awesome. tan 20 का वैल्यू निकालना ही नहीं है राम. tan 20 का वैल्यू p दे रखा है, तो tan 20 को हमने p लिया है और p के फॉर्मेट में ये पूरे चीज को निकाला है. एवरीवन क्लियर? All right, ready for the next question? On your screens now. Here we go. Attack. Come on, fatafat. Let's see. 1 minute per question. We do not have too much time, so let's try and solve every coming question in 1 minute. फटाफट देखते हैं कौन सॉल्व कर पाता है एक मिनट के अंदर. फटाफट.
Yes, come on, let's see who can give the right answer first. Fadafat, fadafat. That's awesome, Ami. Sorry, I did not see the answer because your chat, because I was busy solving the question myself. So wonderful work, you get the star, Ami. But that's good. I hope you are constantly also doing the +3 -1 because that also matters a lot because that's the final marks that you're going to get in the BITSAT examination, right? Awesome. Let's see who can crack this question. यस आई थिंक रामेंद्र ने सबसे पहले आंसर दिया है, ये क्या सही है? नहीं, आपने दो अलग अलग आंसर्स दिए हैं, तो पहला आंसर कनेक्ट करूंगा मैं. यस राम, गेमर्स, यस राज, अमी, यस. लेट्स सी हाउ डू वी डू दिस. वी नो दैट sin inverse of x plus cos inverse of x is pi by 2, right? Sin inverse of x plus cos inverse of x is pi by 2. Are we clear with this, guys? राइट. सो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स. अब जो बचा हुआ साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, अब जो बचा हुआ साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, राइट, वो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के साथ ऐड होगा और पाई बाय 2 देगा. डज दैट मेक सेंस? क्या आशुतोष, प्रीवियस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर क्या है? देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1. ये समझ रहे हो आप? क्यों? क्योंकि कॉट 1/tan होता है. कॉट जो है 1/tan होता है, रेसिप्रोकल होता है ना. tan इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट एंड कॉट इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. कैंसिल होके 1 दे देगा, माइनस माइनस प्लस बन गया. tan 20 इंटू कॉट 20 इज लाइक tan थीटा इंटू कॉट थीटा विच इज 1. समझ में आ रही है बात? तो 1 + 1 2 हो गया. समझ में आ गया आशुतोष जी? going back here, so we have 3 sin inverse of x plus pi by 2 which goes on the other side becomes pi minus pi by 2 which is pi by 2, right? Yes, so sin inverse x is equal to pi by 6. ये बात समझ में आ रही है? 3 sin inverse x is pi by 2, sin inverse x is pi by 6, and straight away x is equal to half because pi by 6 is nothing but 30 degrees and sin 30 degrees is half, so option A is the correct answer. Everyone clear, guys? Come on, फटाफट, let me see that energy. Yes, समझ में आ रहा है? काफी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं यार आज हम लोग. बहुत अच्छा लग रहा है. कोनिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के भी हुए. Very good. Here's the next question on your screens. Fadafat. Yes, one more trig question, one more trigonometry question. Solutions of triangle से involved होना चाहिए ये. Yes, guys. Fadafat. Guys, you're deviating. You just have to focus on the question and get the right answer. Do not distract yourselves with the comment box. आप देख रहे होगे कि मैं distract हो रहा हूँ? बिल्कुल नहीं यार. Krishna has been blocked. Do not worry. Krishna has been blocked. Don't worry, Baba. Guys, you are these are the things that affect you. Should not do that. Kabhi nahi. Come on, guys, फटाफट. चलो देखते हैं ये सॉल्व करके क्या वैल्यू देगा. a अपॉन साइन ए, साइन रूल अप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे, इक्वल टू b अपॉन साइन बी. ठीक है, ये चीज अप्लाई करने के बाद, व्हाट डू वी गेट? a is 2, sin a is 2/3, b is 3 and sin b. ठीक है, so this will give us sin b as, सॉल्व करने के बाद sin b मिलेगा 1. ये सॉल्व करने के बाद sin b मिलेगा 1. 2 2 कैंसिल, 3 ऊपर जाता है, 3 is equal to 3 upon sin b, so sin b is 1 which tells me that b is 90 degrees. ठीक है, अगर b 90 है तो sin b 1 और cos 90 0, cos b 0. ठीक है, अब ये बात समझने के बाद let's say that c is equal to pi minus a plus b. ये समझ में आ रहा है? बिकॉज ABC is a triangle, so a plus b plus c is nothing but 180 degrees. So c is 180 minus a plus b. So can I say that cos of theta is cos of pi minus cos of c is cos of pi minus theta, and cos of pi minus theta is minus cos theta. So minus cos a plus b इसका आंसर है. और अगर माइनस कॉस ए प्लस बी इसका आंसर है जनता, so do we know that cos of a plus b का एक्सपांशन क्या है? cos of a plus b का एक्सपांशन है cos a cos b माइनस sin a sin b. अब इस वैल्यू को फिल इन करना है, और बाहर माइनस साइन है. cos a cos b क्या देगा? फटाफट वैल्यू भरो. cos a का वैल्यू क्या है? cos a का वैल्यू कुछ तो है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट cos a का वैल्यू कुछ तो है. बट cos b का वैल्यू तो 0 है ना यार, तो फर्क नहीं पड़ता. समथिंग इंटू 0 इज 0, दैट गोज अवे. sin a का वैल्यू क्या है? 2/3, राइट, और sin b का वैल्यू क्या है? 1. अब इसको एक्सपांड करो, माइनस ऑफ माइनस 2/3 गिव्स यू 2/3 एंड हेंस द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. समझ में आ रहा है जनता? आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन.
बेसिक बिटसैट लेवल क्वेश्चन जो आपको ब्लफ कर सकता है, और आई एम प्रीटी श्योर कुछ लोगों ने आंसर गलत किए हैं. यस नंदिनी, अभी समझ में आ रहा है कैसे करना है, बी आंसर क्यों सही है. गुड वर्क यामिनी, या गुड वर्क सुजय. Whoever has given answer B is correct. Anuj, that's correct. Good work, good work. Learn from here, guys. Learn from here. बिल्कुल नहीं यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो यार सादत? Why are you having negativity there? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो फिजिक्स पढ़ाता भी नहीं यार. ऐसे क्यों कर रहे हो? खुश रहो, खुश रहने दो, राइट. अच्छे से करो. आई रादर रिस्पेक्ट हिम अ लॉट बाबा. या हरप्रीत, कैन यू पिन पॉइंट द डाउट दैट यू हैव? कैन यू पिन पॉइंट द डाउट दैट यू हैव? देखो a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्रीज है, राइट. a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्रीज है, ये समझ में आ रहा है? या क्यों? क्योंकि ट्राइंगल है. अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है, कैन आई से दैट c इज 180 माइनस ऑफ a प्लस बी? ये समझ में आ रहा है बाबा? Kunal, are you understanding that? I think Harpreet it was, yeah. And cos of 180 minus theta, cos of pi minus theta is minus cos theta. ये सारे अलाइड एंगल प्रॉपर्टीज है जिसको समझ में आना चाहिए, या और सर बराबर सही है. तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, और कॉस ऑफ ए प्लस बी का एक्सपांशन हमने देखा, राइट. और उसको अप्लाई किया. साइन बी 90 डिग्रीज है तो कॉस बी जो है 90 है, तो शॉर्टकट देखो, कॉस ए ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉस बी 0 है, तो 0 इंटू समथिंग इज 0. तो यू हैव टू सी थिंक 2 स्टेप्स अहेड. चेस की गेम की तरह लो इसको, ठीक है. ऑसम ऑसम, चलो बढ़िया. नेक्स्ट सेकंड लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप ये वाला चीज बोल रहे हो, राइट. कॉस ए हम ढूंढ सकते हैं साइन ए के वैल्यू से यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, बट मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मैं अपने कुछ सेकंड्स बचा रहा हूँ. मुझे पता है कॉस बी का वैल्यू 0 है क्योंकि बी 90 डिग्रीज है, तो मैंने एक स्टेप आगे सोचा और कॉस ए का वैल्यू निकाला ही नहीं, राइट. क्लियर है? अरे नंदिनी तो फुल फॉर्म में. नंदिनी चिल ब्रो, इट्स फाइन, देयर विल बी हेटर्स, right. You cannot do that. Come on, forget about it. You have to stay positive, you have to stay focused, and you have to do the right thing always, right. बिल्कुल यार, हम ही कोशिश करेंगे. अब तक 11 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, तो आप कोशिश करना पहले के सारे मॉक टेस्ट देखने की, जितना हो सके, और हम लोग लाने की कोशिश करते रहेंगे. वंडरफुल हरप्रीत, गुड टू सी दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. चलो आखिरी के कुछ मिनट, आखिरी के कुछ क्वेश्चंस खोजने की कोशिश करते हैं फटाफट. द वर्क डन बाय दिस फोर्स वेक्टर इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, राइट. वर्क इज अ वेक्टर और स्केलर गाइज? इज वर्क वेक्टर और स्केलर? Is work a vector or scalar? Yes, it is indeed a scalar quantity. Work does not have a direction. Work is of magnitude, and it is given by the formula force vector dot displacement vector, right. Very good yaar Kartikeya, thank you, right. Thank you by Dark Knight, right. Force vector dot displacement vector. Force vector यहाँ पे दिया हुआ है 4i minus 3j plus 2k, ठीक है. डॉट s डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 3 minus 2 1, राइट. 3 minus 2 1, या एक सेकेंड, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू एंडिंग फ्रॉम दिस, तो 2 minus 3 minus 1 आएगा. -1 -1 -2, सो -3j, एंड 4 minus of -1, सो +5k, ठीक है. अब डॉट प्रोडक्ट लेना है. आई होप सबको डॉट प्रोडक्ट लेना आता है. 4 into -1 is -4, -3 into -3 is +9, 2 into 5 is +10, and hence after calculating your answer comes out to be option C, 15 units. That's correct. तो इसने भी option C दिया है, 4 दिया है भाई, मचा दिया. श्री again working wonders, wonderful. Raj, that's correct, right. Archana, that's not how it works. Yamini, I hope you are understanding. डॉट प्रोडक्ट लगाना है हमें, right. Force vector dot delta s is final minus initial. This is what we get, right. Awesome, or awesome. I do not know Harpreet. I think it's like students like you who always excite me and motivate me to keep on doing better, and that's something that I always try to. Result जो होगा वो देखा जाएगा, हम बस कोशिश करते रह सकते हैं अभी, ताकि फ्यूचर ब्राइट हो, right. Everyone clear? Moving forward. Awesome. ये रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, एक लिमिट का सवाल है. शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट ट्रस्ट मी इट्स अ रियली इजी पीजी क्वेश्चन. कम ऑन गाइस. कार्तिक, ये थोड़ा फॉलो करते रहो यार. नोटिफिकेशन आप कहाँ पे बोल रहे हो? इस पे क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पे? अगर टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन की बात कर रहे हो तो आई ट्राई एंड मेक श्योर दैट टेलीग्राम पे इसका नोटिफिकेशन आता जाए, अगर नहीं आता है तो. कार्तिक, आर यू टॉकिंग अबाउट टेलीग्राम? प्लीज पुट इट अप इन द चैट बॉक्स सो दैट आई गेट एन आइडिया.
right? All you have to do here is apply L'Hospital's rule. All we have to do is apply L'Hospital's rule, and that is whenever it is 0/0, which it is, अगर ध्यान से देखो तो, या अगर आप ध्यान से देखो तो 0/0 x को 0 डालेंगे यहाँ पे तो 2 sin 2 आएगा, -2 sin 2, that's 0, denominator is 0. So let's differentiate. Yes guys, कार्तिक एक बार बताना, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. आई वुड रियली वांट टू नो दैट आप टेलीग्राम के नोटिफिकेशन की बात कर रहे हो क्या? तो डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर. पहले तो मुझे दिख रहा है डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 है यार. यूट्यूब पे तो आता है, आज आई थिंक कल रात को ही आ गया था. बस देखते रहना, हर दिन अगर आप 1-2 बार देख लोगे तो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन. ऑलराइट, बिल्कुल बढ़िया यार. आपका नाम फिर भूल गया, अच्छा नहीं आपने नाम बताया नहीं था. 41. ऑलराइट, सो डिफरेंशिएट दिस. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा. First into second, first into derivative of second, so 2 plus x into derivative of sine 2 plus x, which is cos 2 plus x, plus sine 2 plus x into derivative of 2 plus x, which is simply 1. अब इस चीज का तो कोई डेरिवेटिव नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है. डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 है, right? And here you have to apply limit x tending to 0, and when you plug that, 2 plus 0 is 2, 2 plus 0 is 2, cos 2 आएगा फिर यहाँ पे, और लास्ट में प्लस sin 2 plus 0, which is sin 2. So answer is 2 cos 2 plus sin 2, option D, hence is the correct answer. Everyone clear guys? Yes, awesome, fantastic. ये रहा अगला क्वेश्चन, और एक कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है. चलो लिमिट्स पे और एक क्वेश्चन. आई थिंक आज हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं यार. एक वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट भी हो गया, लिमिट्स कंटिन्यूटी भी ट्राई कर लिया, काफी कोनिक्स के क्वेश्चन कर लिए, ट्रिक के क्वेश्चन कर लिए. इट वाज अ नाइस पैटर्न आई थिंक, राइट? awesome, good to see guys, good to see that. Awesome, चलो बढ़िया. This function is continuous at x equal to 0. f of 0 का वैल्यू पूछा गया है, f of 0 का वैल्यू पूछा गया है. फटाफट जो भी नए लोग हैं प्लीज लाइक कर दो वीडियो को और शेयर करना. जितने लोगों को, यू डेफिनेटली टेक द स्टार प्रणव, you will definitely get what you deserve. So most important is how many marks you are scoring. Yes, very good Pranav, awesome. I'm really happy for you. But gradually, if you have noticed, the whole idea of the star was just to motivate you to solve the question as fast as possible. That's all. The whole idea remains that keeping in mind the time, are you able to solve it fast? I mean, are you able to get the correct answer, right? awesome. तो चलो फटाफट यहाँ पे भी वही हो रहा है, L'Hospitals लगाना है. So derivative of the numerator is 3 plus 2 tan x into derivative of tan x, which is sec square x, upon x का डेरिवेटिव इज 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0. अगर आप x टेंडिंग टू 0 डालोगे तो न्यूमरेटर में 3 आएगा, प्लस 2 टाइम्स tan 0 which is 0, sec square 0 is 1, but that doesn't matter because 2 into 0 will give you 2, and 2 into 0 will give you 0, and hence the correct answer is option A. So option A, I think Shri ने स्टार लिया है इस क्वेश्चन में. वंडरफुल वर्क गाइस, awesome. तो जो भी नए लोग आए हैं प्लीज यार लाइक कर दो वीडियो, शेयर कर दो वीडियो, अपने दोस्तों को भी बताओ, बाद में भी देखना अगर आपने लेट ज्वाइन किया हो, राइट? सो हियर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो फटाफट खड़ाखड़, इट्स एन एक्साइटिंग क्वेश्चन नाउ. क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स मर्ज किया हुआ है. लेट्स सी हु कैन क्रैक दिस वन. फटाफट, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अलोंग विथ यू. लेट्स सी इफ समवन कैन बीट मी. फटाफट. Yes, come on. Let's see who can score this. I have my answer ready. I have solved it mentally and I have my answer ready. Let me see who can score this one in the chat box. Fatafat. All right, guys, come on. सुबह 9 बजे तो मेरी क्लास नहीं होती यार नंदिनी. कौन से क्लास की बात कर रहे हो आप? BITS admission test, Ocean of Knowledge, Birla Institute of Technology and Sciences aptitude test. The correct answer to this question is Shri. Yes, you take the star again. If 4 minus 5i is one root, 4 plus 5i should be the other root because complex roots are always conjugates to each other. Okay, so the sum of roots is this plus this, that you can clearly see is 8. So if the sum is 8 and we know through the quadratic formula that the sum is always minus b upon a, so in this case it's minus a upon 1. तो माइनस ए का वैल्यू है 8, तो ए का वैल्यू बन गया -8. ठीक है, ए का वैल्यू बन गया -8. और अगर आप देखो a कॉमा b के बारे में हमें पूछा गया है, तो इन नन ऑफ द ऑप्शंस a is -8 अपार्ट फ्रॉम ऑप्शन b.
hence option B is the correct answer. I'm not even going to finding the value of B. एक exam atmosphere में आपका problem इधर ही खत्म हो जाता है. Although you can definitely multiply these two, you will find out that the product will come out to be 41 and hence B ka value should be 41, right? But that's not required because I've already solved the problem. This is how you have to, save valuable seconds. All right, guys. तो यस, और कुछ होमवर्क सवाल है जिनको अभी के लिए इग्नोर करते हैं, राइट? विल हैव देम इन द नेक्स्ट मॉक टेस्ट. दिस इज आवर सीबीएसई 12th स्टैंडर्ड algorithm that is working wonders for students. It's helping them a lot. We are having Monday, Tuesday, Wednesday theory sessions. एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस हम सॉल्व कर रहे हैं. थर्सडे फ्राइडे रेलेवेंट एक्सरसाइजेस, और सैटरडे को एक धमाकेदार क्विज होता है जहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं, और मंडे को एंटी क्विज होता है वो वैसे, और मंडे को ट्यूटोरियल रख रहे हैं. तो बेसिकली एवरी चैप्टर इज गेटिंग कवर्ड विद अ प्रॉपर फ्लो. Is benefiting a lot of students. So if you have any of your friends, neighbors, relatives, whoever is entering in 11th standard or 12th standard, please suggest them the channel. Ask them to just try it out, because if it works, if it helps them, then wow, I mean, that's amazing, right? Sharing is caring. Helping someone will definitely help. That's basically good karma, don't you think so? All right, so this is the Telegram app, yeah, where you get regular updates about all the events, all the videos that are happening on YouTube, right? If you have not taken the subscription, yeah, as I was saying about the Unacademy Plus platform, please do share. Phenomenal work is happening on the Unacademy Plus subscription. The best educators are there to help you out with your board examinations, for your entrance examination. If you are in 12th, just entered 12th, please go ahead and select this. If you have just entered 11th, please select this. Plus subscription, plus platform. Get the subscription. As you can see, the price is phenomenally low. 11,250 रुपए पूरे साल भर का प्राइस है ये, ठीक है? And that too for all the subjects. All right, you get 10% discount if you use my code, right, friends? And you can pay this in EMIs as well. All right, guys. So yes, like the video, share the video. As I said, this is a humble request. This will definitely help our channel grow, and definitely give an opportunity to many people to know us, or how we teach. And if you like it, then of course they should get the benefit of that. And if you don't like it, then it's absolutely fine, because as I said, every place there will be haters, and you should be fine with criticism, right? It's just that you should take it constructively, how you feel it is correct. All right, so yes, this is it for me today. That was my time. 11th and 12th ka channels ko subscribe karo. That's my code GP Live, wherever you want to come on to the Plus platform. And as I said, please do comment in the comment section, so we come to know here what is the response that we get for this particular BITSAT thing, right? And if we get good amount of traction, we definitely do want to launch it on the Plus platform, because everything is, in the background work is happening on the BITSAT thing. It's just that we need to find out the right time, the right model, the right structure to launch, right, friends? Yes, Pranav, for this particular, for my code, you can use JEE ke liye, that I'm not sure of. You can try it out, because right now I'm teaching CBSE boards and other competitive examinations gradually, maybe, yes, right? So yes, this was my time. Bye bye, guys. Have fun. Love you all. GP Live code. Bye. Take care. Good night. Have fun. Enjoy. Tada.